structure of diborane. Diborane is B2H6, right? Dimer of BH3. आपने ऑर्गेनिक में इसको डाइमर ऑफ BH3 की फॉर्म में पढ़ा था. हमें पता है कि BH3 अगर होता तो BH3 is boron sp2 hybridized electron deficient compound and Lewis acid. ओके जब हम डाइबोरेन की बात करते हैं तो डाइबोरेन इज बोरॉन एंड बोरॉन having a dimer formation, and dimer formation is having bridged hydrogens. Structure of diborane is having 2 bridged hydrogens and 4 terminal hydrogens like this. Hybridization of boron here is sp3. In diborane, hybridization is sp3. Boron in excited state. Now sp3 hybridization is there. It means boron is going to have 4 orbitals, and in all these 4 orbitals electrons are not equally distributed. One orbital is empty out here, right? Second boron, again it has 4 orbitals, 4 hybrid orbitals, and one orbital is again empty like this. अब हम ये कह सकते हैं hydrogen with 1 electron can overlap with this boron, that is terminal bonding. Again hydrogen is going to bond with this boron. One hydrogen is bonded with boron terminally and another hydrogen. 4 hydrogens are adjusted. Now the central hydrogen is having 1 electron and it's going to satisfy both the boron. Again, this central hydrogen is going to form a bond with 2 boron atoms simultaneously, right? तो अब आप ये कह सकते हो ये central hydrogen जो है, this is called bridged hydrogen. अब आपके पास 2 bridged hydrogen हो गए. And we can say that this bond is going to have a shape like bridged hydrogen is going to have a bond called banana bond. And this bond is called 2 electron 3 center bond, also named as banana bond. The 2 electron 3 center bond is there, which is called banana bond, and these hydrogens, those are called terminal hydrogens. 4 terminal hydrogens are there, but the 4 terminal hydrogens are not in the same plane. If this is behind the paper, the other one is above the paper. It means bridged जो आप कह सकते हो terminal hydrogens, those are not on the same plane. तो molecule क्या हो जाएगा? 3-dimensional structure. This molecule and this molecule is going to be 3-dimensional structure. This structure is not 2-dimensional. This is 3-dimensional by nature. In this way, B2H6 is having a bonding by which
it seems to be as if boron is trying to have complete octet. आप देखो इस बोरोन को लग रहा है कि मेरी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons and 2 electrons. So although boron octet is not complete for boron, but it seems to be as if both the boron atoms are having complete octet. अब आप सोच सकते हो क्या ये सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के हो सकते थे? इज इट पॉसिबल कि सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के होते? तो आंसर इज नो. तो आपके पास जो सेंट्रल बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होगी और जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी. तो वी कैन से दिस इज L1 and this is L2. So in B2H6, two lengths are there, two types of bonds are there, bridged hydrogens and terminal hydrogens. So we can say 4 terminal hydrogens, 4 terminal hydrogens and 2 bridged hydrogens are there. That is about structure of diborane. जल्दी से ड्रॉ करो. हाँ जी बेटे ड्रॉ कर लिया सबने. L1, yes, L1 greater than L2, correct. मैं आपको बॉन्ड लेंथ बता भी देती हूँ, मेरा मैं देख लूँ एक बार. डाइबोरेन में 134 पिकोमीटर मिडल और 119 पिकोमीटर. तो L1 is 134 picometer और L2 is 119 picometer. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड लंबा रहेगा. चलिए आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव करें. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन डाइबोरेन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन? इट इज sp3. देन इन डाइबोरेन ऑल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ. ये आपको क्लियर होना चाहिए. और बनाना बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा. नो डाउट्स. नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखो. इट इज बोराजीन. अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है बोराजीन. बोराजीन इज इनऑर्गेनिक बेंजीन which is called inorganic benzene. Formula of borazine is B3N3H6. Formula of borazine, it is B3N3H6. Now you want to have structure, but the structure is BN
B, N, B, N, and B. Hexagon having alternate boron nitrogens. Each element is going to have hydrogen also. The B3N3H6 is formed. Nitrogen is having a lone pair, but boron is electron deficient. It means nitrogen to boron, there is a coordinate bond. So we can say inorganic benzene. Each nitrogen is having a sharing of its 2 electrons of lone pair with the empty p orbital of boron. Right? अब इसको हमने कहा इनऑर्गेनिक बेंजीन. तो रीजन फॉर दैट इज क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर भी सेम ही था. आप बताओ डिफरेंस कहां नजर आएगा. वहां पे सारे के सारे क्या थे, कार्बन्स. When we say structure of benzene, it is again C6H6 and there are again Kekulé structure, alternate double bonds are there. So you can say benzene and inorganic benzene. So this is benzene and this is inorganic benzene. Clear हो गया concept क्या है इनका? Structures clear हो गए? Next we have is inorganic graphite. Next structure we have is inorganic graphite. Bn is inorganic graphite. That is boron nitride. It has 3-dimensional. Yes. हाँ जी बेटे. नहीं, उसको हम कार्बन से ग्रेफाइट कहते हैं. दैट ग्रेफाइट इज कॉल्ड कार्बन ग्रेफाइट. तो आप कहते हो बोरो नाइट्राइड का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा है. तो कार्बन के कंपाउंड्स को या कार्बन के एलोट्रॉप्स को अलग से ऑर्गेनिक के साथ रिलेट करते हैं. ठीक है, या हम कह सकते हैं जो नॉर्मल ग्रेफाइट है उसके अलावा बोरोन का भी एक ग्रेफाइट बन रहा है. अब इस ग्रेफाइट में क्या है, आपके पास हर चीज बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इट्स हार्ड, नॉट सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट. तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है. अब आप देख सकते हो कि यहां हेक्सागन्स बनते ही जाएंगे. एज देयर इज नो हाइड्रोजन, तो आपको बस नाइट्रोजन और बोरोन बनाना है और आपको रेशियो क्या मिल जाएगी, 1:1. लाइक दिस. ठीक है, दिस इज बोरोन नाइट्राइड. It's graphite-like structure. Structure resemble with graphite. हाँ जी. ना खत्म ही नहीं करेंगे. जैसे ग्रेफाइट भी तो कहीं ना कहीं कार्बन खुला रह ही जाता होगा ना, ऐसे कोई ना कोई तो ऐसा बचेगा ना जिसकी बॉन्डिंग पूरी नहीं होगी. नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. बोरेक्स का फॉर्मूला आता है आपको Na2B4 O7.10H2O. ये बना लिए सारे स्ट्रक्चर्स.
हाँ जी बेटा, बोरेक्स बनाए. स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. बोरेक्स है Na2B4O7 dot 10H2O. Formula of borax is Na2B4O7 dot 10H2O. And its structure is boron 4 and there is oxygen between two boron atoms. हाँ जी. अब आपने हर बोरॉन और बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन रख दिया. One oxygen is there from boron to boron, that is connecting it upside down. ठीक है, आप कितने हो गए? 5 oxygens. One of the boron is going to have OH attached to it, and each boron is having OH, so that valency of boron is complete. ठीक है. अब बेटा जिस बोरोन ने 4 bonds बनाए हैं, one will be coordinate, and this boron is going to be negatively charged because it is acceptor of electron pair. अब आप कह सकते हो, as there are 2 negative charges on boron lower and boron upper, यहां पे 2 सोडियम आइंस बाहर पड़े रह गए, राइट? और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने चले गए अंदर? 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स अंदर हैं. इट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर इनसाइड द स्ट्रक्चर एंड dot 8H2O is written outside. This is the structure of borax. In this structure we are having one boron with 4 bonds and the other two boron atoms with 4 bonds and 2 boron atoms with 3 bonds, right? OH, OH, OH and OH, 2 water molecules are inside the structure and 8 water molecules are outside the structure. It means overall, अगर आप उसका फॉर्मूला देखोगे तो बेटे इनऑर्गेनिक में वहां पे एक फॉर्मूला लिखा गया है कि बोरेक्स इज Na2B4O7 and it is also written as Na2B4O5 OH4 dot 8H2O. This is the actual formula of borax. तो जब वो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इस फॉर्मूला का मतलब है वो आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना जा रहे हैं. तो NCERT has written this formula. It means you must know that 5 oxygen atoms inside, 4 OH inside and 8 H2O outside the bracket. This is the structure of borax. टोटल 10 H2O पूरा करना है ना आपके. 4 हाइड्रोजन्स तो कितने वाटर हुए? H2O 2 ही हुए ना. 4 OH हो तो 2 H2O बन जाएगा ना, इसलिए. ठीक है. जैसे इसी में से आप ऐसा लिखते हो जब Na2B4, अब वाटर, इसको में से वाटर ले लो, 2 वाटर को बाहर ले जाओ, डॉट 10H2O जब लिखोगे तो देखो जरा 5 ऑक्सीजन तो है नहीं, 1 यहां 2 यहां से बची है ना, तो 7 हो जाएगा ना. आज तो मंडे में जल्दी जाना.
गाड़ी घर पे खरीदते इसमें क्या बोल रहा है दो चीजें। हाँ जी बेटा, क्लियर नोट सबने स्ट्रक्चर समझ आ गया बोरेक्स का। अब हमें मूव करना है कार्बन फैमिली एंड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन कार्बन फैमिली। हाँ जी बेटा, चलिए आगे। यहाँ तक सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर है, क्योंकि आपको जिनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेटा, अगर उनके स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो प्रॉपर्टीज करना आपके लिए इजी हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता होगा बोरेक्स क्या है, देन यू कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज कि अच्छा ये कंपाउंड था जिसका हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ। नेक्स्ट आपके पास है कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले है डायमंड एंड ग्रेफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड देन फ्लोरीन्स आल्सो। द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन एंड इट्स फैमिली, द कंपाउंड्स and their structures. तो कार्बन फैमिली में बेटा आप करोगे कार्बन and its important compounds. First we have carbon dioxide. Resonance is possible in carbon dioxide so we can say structure of carbon dioxide and its resonance. So we can draw carbon dioxide like this. Thus overall we can say that carbon oxygen bond in carbon dioxide is stronger than double bond. Number 2, carbon monoxide. Carbon monoxide is carbon triple bond oxygen. In this bond, oxygen is forming a coordinate bond with carbon. This lone pair, due to lone pair on carbon, it can act as ligand. Ligand का मतलब होता है Lewis base, or we can say the another term for ligand or Lewis base is electron rich species, or we can name it as nucleophile also. This lone pair of oxygen cannot be donated. बेटा ये अगर डोनर बनेगा, only carbon can give its lone pair. Oxygen cannot. Oxygen already एक lone pair दे चुका है. It cannot give its another lone pair. तो एक एलिमेंट एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी नहीं बनाना चाहेगा. ऑक्सीजन कैन नॉट मेक मोर देन 3 बॉन्ड्स. यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स है, तो वो चौथा बॉन्ड नहीं बना पाएगा. इट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर हमारे काम का नहीं है. कार्बन का लोन पेयर इट कैन बी गिवन टू सम मेटल और सम स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना बेटा. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए लाइक दिस. तो ऑक्सीजन को तो कोई नुकसान नहीं है, उसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है. कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही. फॉर गेटिंग कंप्लीट ऑक्टेट इसने ऑक्सीजन के साथ ये लोन पेयर शेयर कर लिया. यानी अब ये ऐसा बन गया ऑक्सीजन एंड दिस क्रॉस इज ऑफ ऑक्सीजन लाइक दिस. ठीक है, समझ आया?
Third is carbonate. Third structure is of carbonate. Carbonate is half into valence electron of carbon are 4, monovalent it has 0, minus charge of cation 0, plus charge of anion 2. It comes out to be 3. It is sp2 hybrid orbitals we have calculated. So carbon is sp2 hybridized. It means planar structure. 1 double bond, 2 oxygens are negatively charged. Resonance is possible. So resonance is leading to a partial double bond character in carbonate. Due to resonance, we are having a resonance hybrid and there is partial double bond character in each carbon-oxygen bond and 2 negative charge. So we can say bond order is going to be 4 by 3, 1.33, and charge on each oxygen is minus 2 by 3. .666. 0.666, sorry. 0.666, यानी 67 के आसपास. Structure of carbonate is clear. Fourth compound is carbonic acid, H2CO3. When we say H2CO3, the H2CO3 is having OH bonded to carbon like this. यानी CO3 पे अब 2 हाइड्रोजन्स भी लग जाएंगे तो इट इज H2CO3, राइट? अब आपके पास यहां पे हम कह सकते हैं ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ. लेकिन यहां पे जब आपने कार्बोनिक एसिड बनाया तो ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ. Natural presence of hydrogen is going to change the bond length of these 2 carbon oxygen bonds. ठीक है जी. Fifth structure we have is SiO2, that is sand, silica. SiO2 is having a structure with each silicon conjugative. रेजोनेंस हो रही है बेटे, ऐसा नहीं कि उसमें रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसमें जब रेजोनेंस करोगे तो आपके पास तब भी अगर रेजोनेंस हो भी जाए तब भी इस एटम के प्रेजेंस की वजह से इस बॉन्ड की लेंथ को फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक एटम अगर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो यहां पे एक एटम के एक्स्ट्रा आने से
यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफरेंस हो जाएगी, जैसे एंगल का फर्क पड़ेगा। आप कहते हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इक्वली डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इन पे तो आई, इन पे जैसे वन नेगेटिव फिक्स कर दिया, तो जब आपने इसको वन नेगेटिव से बॉन्डिंग कर दी तो यहाँ एंगल कुछ और होगा और वहां एंगल कुछ और होगा। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है बेटे, और ये चार्ज है ना। अगर आप इसकी रेजोनेंस करोगे, ये बनाओगे, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन के साथ उतना स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना। जबकि यहाँ पे अगर रेजोनेंस कर रहे हो तो यहाँ पे तो कोई इंटरफेयर, नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, राइट? अब सिलिका का जो स्ट्रक्चर है दैट इज SiO2, इट इज हैविंग ए स्पेशल स्ट्रक्चर। हम कहेंगे इसके स्ट्रक्चर में SiO2 ऐसा नहीं बन पाया, इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल बना, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब जब हमने कहा इट हैज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं था। तो रीजन क्या है? बिकॉज सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म स्टेबल pi bonds due to large size। तो सिलिकॉन का साइज बड़ा है, इसलिए ये पाई बॉन्ड स्टेबली नहीं बना सकती। लाइक कार्बन तो पाई बॉन्ड्स बना सकता था, सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म स्टेबल पाई बॉन्ड्स, देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक CO2। तो आपके पास SiO2 का स्ट्रक्चर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब हम इस टॉपिक पे कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, while SiO2 is a solid। At room temperature, तो हमें साफ पता है कि रूम टेम्परेचर पे सैंड इज गोइंग टू बी ए हार्ड सॉलिड विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, while carbon dioxide is a gas। The reason for that is carbon double bond carbon, a small sized molecule, small molecule। तो फोर्सेस कौन सी हो जाएंगे बेटा? वेंडरवाल फोर्सेस, दोस आर वीक वेंडरवाल फोर्सेस, वीक वेंडरवाल फोर्सेस आर देयर, देयरफॉर गैस। जबकि अगर SiO2 की बात करते हैं तो SiO2 इज हैविंग जायंट 3 डायमेंशनल network like structure, covalent bonds are the binding force, covalent bonds are there, binding atoms together। तो नेचुरल बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, बहुत बड़ा साइज है, तो आप कहोगे देयरफॉर सॉलिड, और इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। दिस इज नेम्ड एज कोवेलेंट सॉलिड। अगर हम CO2 को सॉलिड बना दें तो दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस, ऑल्सो नेम्ड एज ड्रिक कोल्ड। तो SiO2 को तो हमने सॉलिड बनाया, तो था ही सॉलिड। CO2 को सॉलिडिफाई कर दिया, ड्राई आइस, और ड्रिकोल्ड इज द नेम। दिस इज नाउ नेम्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, और हमें पता है कि CO2
solid can be sublimed to CO2 gas. It can go for sublimation. यानी एक बना तो हमने लिया लेकिन it's not very stable in its solid state. जैसे ही आप हवा में एक्सपोज करोगे, हाई टेम्परेचर ले जाओगे, रूम टेम्परेचर पे ले आओगे तो ये अपने आप उड़ जाएगा सीधा ही CO2 ड्राई गैस से, आप कहोगे CO2 सॉलिड से, यानी ड्राई आइस से सीधा ही CO2 गैसियस कन्वर्ट हो जाएगा. सब्लिमेशन टेंडेंसीज आर देयर. आप बताओ कोवेलेंट सॉलिड्स आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट. Covalent solids are going to have high boiling point. Sixth structure we have SiO4 4 negative silicates. Silicates के structure में बेटा SiO4, 4 oxygen atoms are there and each oxygen is negatively charged. sp3 hybridized tetrahedral structure, 109.5 degree angle, everything is okay. अब this silicate is represented as a special type of 3-dimensional structure. हम उसको represent कैसे करेंगे? This dot is silicon and this circle is oxygen. 4 oxygens are represented as 3 on the vertices of triangle and 1 is above silicon. Now each oxygen is bonded to silicon. And each oxygen is negatively charged. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट्स. हम 3-dimensional को 2-dimension में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिप्रेजेंट इट एज अ ट्राइंगल. तो सिलिकेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ट्राइंगल. When we have a single silicate SiO4 4 negative, this is called orthosilicate. Orthosilicate. Then there is a term. हमें बताइए कि silicates they can polymerize together. Silicates can form polymeric structures. हाँ जी, ऑर्थोसिलिकेट इज SiO4 4 नेगेटिव. ये जो अकेला है इसको ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं. अब अगर आपको ये दिखे कि द टर्म इज डाइमर ऑफ सिलिकेट, इसका एक डाइमर बनाना है आपने विद 1 ऑक्सीजन कॉमन, विद 1 ऑक्सीजन शेयर्ड और कॉमन, और ये बन जाएगा पायरोसिलिकेट. क्योंकि सिलिकेट्स ग्लास लाइक है. सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ग्लास लाइक है. ग्लास लाइक अपीयरेंस इज देयर. So we can say these silicates are going to be glass-like और shining crystals are there. तो इनके बहुत सारे यूजेज हैं. तो अब हमने डायमर बनाना है. तो डायमर में देखो जरा कैसे बनाया. आपने 2 ट्राइंगल का एक ऑक्सीजन कॉमन कर दिया लाइक दिस. ठीक है.
सेंट्रल डॉट इज सिलिकॉन, उसके ऊपर एक एक रिंग लगा दिया, ये भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये सारे इसके साथ अटैच्ड हैं लाइक दिस. दिस इज फॉर्म्ड एंड नाउ इट इज Si2. 2 सिलिकॉन हो गए. ऑक्सीजन कितने बचे बेटे? 3 3 6 और 1 7. नेगेटिव चार्जेस आर -6 बिकॉज जो ऑक्सीजन कॉमन है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा. वेन एवर ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल. तो सेंट्रल ऑक्सीजन ने अब 2 बॉन्ड्स बना लिए थे, इसलिए वो तो न्यूट्रल हो गई. तो 2 सिलिकेट्स आर ज्वाइन टुगेदर, तो ये बन गया पायरोसिलिकेट. इन द सेम मैनर बेटा आपके पास सिलिकेट्स अगर ऐसे ही जुड़ते चले जाएं, ऑक्सीजन कॉमन होती जाएंगी और ये चेन जैसे बन जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी अ चेन सिलिकेट. इन द सेम मैनर अगर सिलिकेट्स ऐसे ही शेयरिंग करते करते रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लें, तो आप कहोगे दिस इज अ रिंग सिलिकेट. तो चेन सिलिकेट, देन वी कैन हैव रिंग सिलिकेट. Then it can be sheet silicate. If silicates are going to share 3 oxygens, then we can say it's going to be a sheet silicate. एक मिनट. देखो बेटा अगर एक ऑक्सीजन कॉमन लो और 2 चीजें जुड़ गई तो ये बना पायरोसिलिकेट. ठीक है, यानी 2 चीजें आपस में जुड़ के एक साथ रहेंगी, डाइमर बनेगा. अगर ऐसे ही बहुत सारे सिलिकेट्स आपस में जुड़ते जाएं, 2 जुड़ सकते हैं तो फिर 4 भी, 5 भी, 6 भी, जितने मर्जी जोड़ते रहो, तो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनता जाएगा. वी कैन से चेन सिलिकेट्स. 2 ऑक्सीजन्स आर शेयर्ड. हर एक सिलिकॉन कोशिश करेगा सिलिकेट 2 ऑक्सीजन शेयर करने की. अगर ये चेन जो है रोटेट होके फिर जुड़ जाए तो आप कहोगे ये बन गया रिंग सिलिकेट. रिंग लाइक स्ट्रक्चर था तो आपने कह दिया रिंग सिलिकेट. ठीक है, यहां पे आप कहोगे 2 ऑक्सीजन्स आर शेयर्ड बाय ईच सिलिकेट. इसमें अब आपके पास एक सिलिकेट अपनी 3 ऑक्सीजन दूसरों के साथ शेयर करने को तैयार है. तो जब 3 ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगी, 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, तो आप कहोगे ये बन जाएगा शीट लाइक सिलिकेट. ये 3 डायमेंशनल तो नहीं बना लेकिन शीट जैसा बन गया, 2D में शीट जैसा. एंड इफ 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, सारे के सारे ऑक्सीजन वो दूसरों के साथ शेयर करने लग गए, देन 3 डायमेंशनल silicates are formed. इसका मतलब जितनी ज्यादा आप शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन नोटिस करते जाओगे उतना स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी. तो सिलिकेट्स कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट कंडीशंस अप टू डिफरेंट लेवल. यानी आप कितने लेवल तक उसकी शेयरिंग कराते हो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस. When we say these are cyclic or ring silicates, chain silicates,
तो आपके पास इनका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू बी SiO3 2 negative n times. General formula of chain and ring silicates is going to be SiO3 2 negative whole n times. In sheet silicate, general formula will become Si2O5 2 negative again n times. That is formula for sheet silicates. और बेटा 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स में आपने क्वार्ट्स सुना हुआ है. क्वार्ट्स के जो क्रिस्टल होते हैं, ये जो 4 ऑक्सीजन्स आर शेयर्ड, ये है 3 डायमेंशनल सिलिकेट. 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स. तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्वार्ट्स क्रिस्टल. क्वार्ट्स जो है वो एक 3 डायमेंशनल सिलिकेट है. जितनी भी क्लेज होती हैं वो सारी शेड सिलिकेट होती है, जैसे काओलिनाइट, टेल्कम पाउडर, ये सब जो है दीज आर शीट सिलिकेट्स. यानी शीट सिलिकेट्स का एग्जांपल लिखना तो आपको टेल्क याद रहना चाहिए. काओलिनाइट, हाँ बेटे. और ये क्लेज है. क्ले मतलब मिट्टी का फॉर्मूला है. मिट्टी में ऐसे सिलिकेट्स मिलते हैं. ठीक है. एस्बेस्टॉस इज अ शीट सिलिकेट. सुना हुआ है एस्बेस्टॉस? बायोवैलेंट सुना होगा. एस्बेस्टॉस फाइबर्स होते हैं. एस्बेस्टॉस के फाइबर्स होते हैं और एस्बेस्टॉस की शीट्स बनती है बेसिकली. इन फाइबर्स से फिर बाद में फाइबरस चीजों को इकट्ठा करके हम शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. तो एस्बेस्टॉस एक डिजीज से रिलेटेड है, एस्बेस्टोसिस. जिस कंपनी में एस्बेस्टॉस बनता है वहां फिर एस्बेस्टोसिस नाम की डिजीज होने का खतरा होता है, क्योंकि इसके फाइबर्स अगर नेजल चैम्बर में चले जाए तो लंग्स में इंफेक्शन कॉज कर देते हैं. ठीक है. तो ये एस्बेस्टॉस जो है ये आपका चेन सिलिकेट है. तो आपने अपनी रूटीन में ये कहां कहां सुने हुए आपको पता होना चाहिए. आपने जितने भी स्टोन्स होते हैं ना, जैसे एमराल्ड, टोपाज, वो सब सिलिकेट्स होते हैं. रूबी का सुना होगा ना, चाहे रूबी की रिंग पहन लो, टोपाज की पहन लो, नीलम पहन लिया. तो जितने भी ये स्टोन्स होते हैं ऑल दीज आर मेड अप ऑफ सिलिकेट्स. चलो अब ये नोट करो जल्दी से. दिस इज सिलिकेट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स. और इसमें से जो और पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं आइलैंड स्ट्रक्चर. मुझे तो आइलैंड जैसा कुछ लगा नहीं, लेकिन स्टिल इट इज कॉल्ड आइलैंड स्ट्रक्चर. काउनाइट उसका एग्जाम्पल है बेटा. मिट्टी का नाम है, एक तरह की ओर है ये. जैसे टैल्क भी क्या होता है, जैसे आपने उसे मुल्तानी मिट्टी सुनी हुई है, तो मिट्टी की टाइप होती है ना जैसे. तो काओलिनाइट एक तरह की ओर है, एक तरह की क्ले है, जिस क्ले में अल्यूमिनियम और सिलिकॉन प्रेजेंट होता है. तो उसमें सिलिकेट जो प्रेजेंट है वो शीट सिलिकेट है. काओलिनाइट जो है इट इज अ क्ले. क्ले मैंने इसे लिखा क्योंकि क्ले तो आपको समझ आता है. जैसे आपने वो क्ले टॉयज बनाए होंगे कभी छोटे बचपन में. आप तो बड़े हो गए ना, आप तो क्ले से नहीं खेलते. या खेलते हो अभी भी? बड़े हो गए. अब हमें करना है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स का कंपैरिजन. इसके साथ हमारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएंगे. कल से फिर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कल मोस्ट प्रॉब्लम हम चैप्टर खत्म कर पाएंगे. बस डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स का स्ट्रक्चर कर लो, देन विल पैक द क्लास. फुलरीन्स का कैसे बनाएंगे?
बनवाना ही नहीं मैंने तो लिखवाना ही है उसके बारे में। क्या नहीं समझ आ रहा? अच्छा बेटा उसके लिए तो मुझे पहले वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया सबने? अच्छा ठीक है। लास्ट स्ट्रक्चर से हमारे पास 3 इकट्ठे एक साथ चलाते हैं डायमंड। मेरे डायमंड के बारे में जो जो पता होना चाहिए वो सब नोट करेंगे, बस स्ट्रक्चर आपको बताइए। Each carbon is sp3 hybridized, bonded to another carbon. 154 picometer is the bond length. So carbon-carbon bond length is single bond. It's fixed 154 picometer. इसका भी स्ट्रक्चर नेटवर्क लाइक है। आप कहोगे ये भी बिल्कुल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। क्या चीज बेटे? डायमंड। डायमंड मतलब प्योर कार्बन है। कार्बन ही कार्बन एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो अब एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, फिर उसने फिर 4 बॉन्ड बनाए, जैसे मर्जी बना दो, बस 4 बॉन्ड बनाने हैं हर कार्बन के, और टेट्राहेड्रल सा शो करता है। ठीक है? Each carbon is tetrahedrally bonded. It is covalent solid, very hard, no free electrons, therefore bad conductor of electricity. Purest form of carbon, lustrous because of high refractive index. Value of its refractive index is 2.5. Refractive index of diamond is going to be 2.5. Note it down. Very high density, high melting and boiling point.
because for boiling we have to break covalent bonds. Delta H naught formation of diamond is not equal to 0 because it is not the most abundant allotropic form. Right? Has written it's about diamond and its structure. Structure is related to its properties. Very hard known substance. It is used for making, you can say, jewelry items, and also for using grinding or polishing of hard materials. It is also used for making dyes for drawing wires from metals. We can say its uses are, because of its luster, it's used for jewelry, and as it is hard, it can be used for cutting glass and making borers for rock drilling. Cutting tools used in cutting glass, we can say. Borers of drill machines. Jewelry making. Dyes for drying wires. Right? That's all about your diamond, and structure of diamond is over. Now, special property of diamond is it has very high thermal conductivity. It is about 5 times to that of copper. And due to this high thermal conductivity, the tools having tip made up of diamond do not overheat and hence are extensively used for drilling and cutting properties. We can say it's bad conductor of electricity, but it is good conductor of heat. Diamond is a good conductor of heat, almost 5 times to that of copper. That's why it's not being overheat, and we can use it in the drills for long duration without overheating problem. Clear? Next structure we have is graphite. After diamond, next structure we have is of graphite. There is 8th structure of carbon and its compounds part. Graphite, most abundant allotrope, most abundant allotrope of carbon with delta H naught formation equal to 0.
In case of graphite, the structure of graphite is each carbon is bonded to 3 more carbons and is forming hexagonal ring-like structure with sp2 hybridization. Another hexagonal layer is there. So we have a layer-like structure of graphite. And between two layers, there is a weak van der Waals force which is going to hold these layers together. Between two layers, 340 picometer is the distance. Therefore, distance, as it is more distance, forces are going to be weak. Van der Waals forces are weak. And the bond length here is 141.5 picometer. It means in case of graphite, bond length is shorter than that of diamond. So why this bond length is going to be short? Reason is a pi bond character is there in graphitic structures. The structure of graphite is going to have a pi bond character. We can say when hexagons are formed, there is a tendency of carbon to have sidewise overlap as well. Some free electrons are there with the carbons having 3 bonds. Some free electrons will make it a good conductor. A good conductor of electricity. It is lustrous, but not as lustrous as diamond is. Now its lustrous nature is because of free electrons. The lustrous nature of graphite is going to be there because of free electrons. Because some of the carbons are going to have free electrons, those are not involved in pi bond formation. It is going to be opaque but still lustrous. It is good conductor of heat as well as electricity. And we can say that conductor of electricity and heat here, reason is electron. But in case of diamond, the reason is not free electrons, because in diamond there are no free electrons. Graphite is going to be a soft allotrope of carbon. It is a soft allotrope. Slippery nature. Why it is going to be slippery? By nature. Reason is because of layer-like structure. Layer-like structure with weak van der Waals forces. Weak van der Waals forces. Used as a lubricant. Oil plus graphite is called oil dag. And water plus graphite is called aqua dag. Then uses of graphite are, as it is good conductor, it can be used to make electrodes for dry cell. It is used to make pencils. It is used to make crucibles that can withstand high temperature. Used as a moderator for nuclear reactor and
used as a lubricant. So we can say that its uses are used as electrodes, first point, used as electrodes, lubricant, crucible making, pencil, leads are made up of this. All these are uses of graphite. Ninth structure is structure of fluorines. Next, allotrope of carbon, that is ninth one, last structure of this carbon family. It is of fluorines. Again pure carbon like graphite and diamond. So fluorines are having pure nature of carbon, again purest form of carbon. Fluorines are crystalline allotrope of carbon. It is crystalline like graphite and diamond. Crystalline allotrope. Coke is amorphous allotrope of carbon, while fluorines are crystalline allotrope. Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, architect. On the name of this architect, we named it as fluorines. The scientists, those have discovered this fluorine and structure of fluorine, those are given Nobel Prize in Chemistry, but named after a architect just because its geometry, its structure is architectural miracle. C60 is called Buckminster Fullerene. Buckminster Fullerene. Now, preparation of fullerene. When graphite is heated, in electric arc or in presence of helium or argon. It is heated with electric arc. In some inert material, inert gas, helium or argon can be taken. We get carbon vapors. These carbon vapors are condensed. Condensation takes place, and this condensate is having C60 and little C70 is also there. These two fluorines were discovered first and separated by chromatography, separated by a special technique, chromatography. Fullerenes are having ball-like structure, bucky ball-like structure is there, rugby ball or bucky ball-like structure. Bucky ball-like structure. With 5 and 6-membered ring present in it. It means some pentagons are there and some hexagons are also there. Like in football, we are having pentagons and hexagons joined together to form a football-like structure. There is no free carbon end. There is no free carbon end in the structure of fullerene.
Each carbon is going to have its bonds completed. No free carbons are there in its structure. Hexagons and pentagons are there. That is important. Like in this structure, I have completed this structure with hexagons and pentagons, and carbons are bonded to each other completely. In this way, we can form a three-dimensional football-like structure. C60 is having 26 membered. C60 is having 20 hexagons and 12 pentagons. That is important about C60. Now 6-membered rings can be fused to both 6-membered as well as 5-membered. For example, I have shown you 6-membered can be fused to 6-membered as well as 5-membered. But each 5-membered is always linked to a 6-membered ring. Each 5-membered is always connected to 6-membered ring. It means hexagons joined to both 6 and 5-membered ring. But pentagons joined to only 6-membered rings. The description of fluorines: 6-membered, 5-membered rings are there. Those are joined together to form a ball-like structure. Three-dimensional network-like structure is there. Now C70 is in the same manner. It is going to have again 5-membered and 6-membered. C70 is having 25 6-membered and 12 5-membered rings. C70, it is going to have 25 hexagonal structures and 12 pentagonal structures. So these are fluorines and their structure description. We must remember some of the details of fluorines also, like graphite and diamond. Now, fluorines are used as, where we have used these fluorines till now. Fluorines are having covalent nature, and it is clear that there are two types of bond lengths available. One is 145.3, another is 138.3. The two bond lengths are there. L1 is 145.3 picometer and another bond length is 138.3 picometer. These are the two types of bond lengths involved in fluorines. Two types of bond length means two types of bond. As it is covalent, and we can form its compound with potassium K3C60. This compound with group 1 is formed till now. Compounds of C60. One of the important compound is potassium C60. K3C60 means C60 is having 3 negative charge. Potassium ions, 3 potassium ions are going to neutralize it. This compound is a superconductor below 18 Kelvin and carries electric current with zero resistance. It is a superconductor. It means very good conducting power. Zero resistance is there. Superconductor, zero resistance. Therefore, electricity can be saved. But the temperature ranges at 18 Kelvin, below 18 Kelvin or at 18 Kelvin, less than 18 Kelvin we can say. It can act as superconductor. This is the first application, important application of fluorines. It can form complexes with platinum
and at present we have no practical use as it, but in future it can be used in large number of technologies like nanotechnology, eco-technologies, etc. The usages are, we can say, first usage you can write about this superconductor potassium compound, and then is in future it will be used widely in nanotechnology. Nanotechnology means a technology which can study up to 10 raised to power minus 9 meter length. The nanotechnology will have the important usage of fluorines in future. That's about your fluorines and structure of fluorines. Just note it down. Metamorphous allotropes of carbon are coke, charcoal, carbon black. All these are amorphous form of carbon. Wood charcoal, animal charcoal, activated charcoal, carbon black. All these are amorphous forms. 3 crystalline forms are there: diamond, graphite and fluorines. We have done 3 out of these. Crystalline we have done. Amorphous forms are not having particular structure of their own. Their structure is not to be done then. Now Kohinoor is the diamond which is very pure, very large sized diamond, which is weighing 108.93 carat at present. It is taken from India to England. At that time when it is taken from India to England, it was weighing 181 carats. And 1 carat, you must remember, 200 milligram. 1 carat is 200 milligram. And in England, it is then further modified, its form is modified, and then 43% of its weight was lost. Nowadays, this diamond is in England's Queen, crown of England's Queen. We are having Kohinoor from India, 108.93 carat. 1 carat, 200 milligrams. That's all about today's lecture. We have finished with the structures. In the next coming class, we'll start with chemical properties of fluorines. डायमंड के चेक कर लेंगे, फिर कल भी खत्म हो जाएगा। हम